अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर। आज मेरी सबसे पहले वीडियो जो है ना वो फ़िज़िक्स और फिज़िक्स के ब्रांचेस के बारे में है कि फ़िज़िक्स है क्या और इसकी कितनी ब्रांचेस है और किस बुनियाद पे इन्हें डिस्ट्रीब्यूट की है या क्लासिफाई की है। सबसे पहले है फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स क्या है? हाउ टू डिफाइन फ़िज़िक्स? फ़िज़िक्स इज़ बेसिकली द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with matter and energy and their mutual relationship फॉर एग्ज़ाम्पल मैटर जो है ना वो एनर्जी में कन्वर्टेबल है एंड एनर्जी जो है ना वो मैटर में कन्वर्टेबल है। इस दोनों की जो मैटर और एनर्जी की जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है इसकी स्टडी को जो है ना फिज़िक्स कहते हैं। फिज़िक्स की कुछ ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट की है और सबसे पहले फिज़िक्स की जो मेन ब्रांचेस है उन्हें फिज़िक्स हैज़ बीन क्लासिफाइड into two categories. Number one है classical mechanics and second is modern physics. Number two है modern physics. सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिकल की। क्लासिकल फिज़िक्स में सबसे पहले हमारे साथ जो है ना वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स फिज़िक्स की वो ब्रांच है जो डील करती है मोशंस ऑफ अ बॉडी। सेकेंड वन इज हीट क्लासिकल फिज़िक्स की वो ब्रांच है जो डील करती है हीट प्रॉपर्टी ऑफ हीट इट्स नेचर एंड मैकेनिज्म and transfer of heat and its transfer. In the same way, third is thermodynamics. Thermodynamics deals the changing of heat energy into other form of energy and vice versa. The fourth one is sound. It is defined as the branch of classical physics which deals with the study of sound and its natures. The next one is optics. It deals with the nature of light, its production, its propagation, and other phenomena. The next one is electricity and magnetism.
It deals with the study of flow of charges and nature of produced मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे एक बात बताना ज़रूरी है कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी जब भी फ़्लो करती है, जब भी चार्जेस फ़्लो करते हैं, तो उनके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, और जब इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस रेस्ट में हो तो उनके इर्द गिर्द कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। द नेक्स्ट ब्रांच इज़ एटॉमिक फिज़िक्स। एटॉमिक फिज़िक्स ये फिज़िक्स की, क्लासिकल फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम एटम्स को स्टडी करते हैं। एटम्स, इट्स नेचर्स, इट्स सब पार्टिकल्स, and structure and structures। मज़ीद हम बात करते हैं मॉडर्न फिज़िक्स के ब्रांचेस की। मॉडर्न फिज़िक्स के सबसे पहले जो ब्रांच है वो है न्यूक्लियर फिज़िक्स। न्यूक्लियर फिज़िक्स में हम न्यूक्लियॉन्स की स्टडी करते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, इट्स स्ट्रक्चर properties and reactions among nucleons। न्यूक्लियॉन्स जो पार्टिकल्स न्यूक्लियस में होती है, जैसे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उन्हें न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। सेकेंड वन इज सॉलिड स्टेट फिजिक्स। हम जानते हैं कि सॉलिड या किसी मैटर के चार फॉर्म में पाया जाता है, जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस और प्लाज्मा स्टेट है। तो माया की जो ठोस की जो स्टडी है, माया की जो ठोस शक्ल की जो स्टडी है, उसके मुताले उसको सॉलिड स्टेट फिजिक्स कहते हैं। द स्टडी ऑफ सॉलिड स्टेट। अगला है सेमीकंडक्टर फिजिक्स। It deals with the study of designs or components that perform as an electron, which perform as an electron in semiconductors। पार्टिकल फिजिक्स।
The study of each and every type of particle is known as deals with the study of particles. That includes the electrons, protons, neutrons, atoms, subatoms. Each and every type of particle come under the study of particle physics. Plasma physics. हम सब जानते हैं कि माया 4 आलतों में पाया जाता है। इनमें से एक आलत प्लाज्मा फिजिक्स है। मादा की प्लाज्मा आलत के मुताले को प्लाज्मा फिजिक्स कहते हैं। इसके अलावा फ़िज़िक्स की कुछ और भी ब्रांचेस है जो फ़िज़िक्स को दूसरे मज़ामीन के साथ को रिलेट करती या उनके साथ जो रवाबित कायम करती है उनको इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड कहते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड। इनमें सबसे पहले है एस्ट्रोफिज़िक्स, जो स्टडी ऑफ स्टार्स और यूनिवर्स इज नॉन एज एस्ट्रोफिज़िक्स। सितारों और दुनिया कायनात के मुताले को एस्ट्रोफिज़िक्स कहते हैं। बायोफिज़िक्स। यूजेस ऑफ फिज़िक्स इन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। Processes is known as biophysics. Third one is chemical physics. Chemical physics में हम use of physics in chemical processes is known as chemical physics. And the last one is medical physics. मेडिकल फिज़िक्स जो है ना, द एप्लीकेशन ऑफ फिज़िक्स इन मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड इज़ नॉन एज मेडिकल फिज़िक्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। फ़िज़िक्स की तारीफ़ हो गई, उनके डेफिनेशंस हो गए और उनके सब क्लासेस हो गई और उनके जो सब ब्रांचेस है वो हो गई और जो दूसरे सब्जेक्ट से फ़िज़िक्स से रिलेट करता है इन सब को मैंने डिफ़ाइन किया। होपफुली आई एम मच कॉन्फिडेंट कि ये आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी वीडियो समझने में, अपने टॉपिक सॉल्व करने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।